ये आपका है um, ईशा। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट लाइट एंड लाइट रेज। ठीक है। अच्छा जी, लाइट में हमारे पास क्या होता है? ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू लाइट जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डेफिनेटली आर द वंस विच गिव ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट लुमिनस, ठीक है जी। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स they give off light and non-luminous objects they do not give off light। इसी तरह with respect to absorption या reflection हमारे पास दो तरह के objects होते हैं। एक हमारे पास objects होते हैं which are opaque। opaque objects they block light। ठीक है जी। और दूसरे हमारे पास होते हैं opaque होते हैं, और दूसरे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स allow light to pass through them। ठीक है। Between opaque and transparent we have some objects which are called translucent। Translucent objects are the ones which block sunlight and which allow sunlight to pass through as well। तो कुछ लाइट को ये ब्लॉक कर देते हैं और कुछ लाइट को ये अलाउ करते हैं कि वो पास थ्रू कर जाए। अच्छा, लाइट के बारे में, लाइट के बारे में ये आप आगे जाके ए लेवल्स में अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि देयर इज सम डिबेट। लाइट की डिबेट क्या है कि लाइट वेदर इट इज एनर्जी और इट इज पार्टिकल्स। ठीक है। सिमिलरली एनर्जी और पार्टिकल्स के साथ साथ इसकी एक और डिबेट जो है वेदर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। और लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, कि या ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जाती है या ये वेव्स की फॉर्म में जाती है। नाउ इट कांट बी ट्रू कि दोनों चीजें ऐसी हैं, मतलब इट कैन बी ईदर स्ट्रेट लाइन और अ वेव, इट कैन बी ईदर एनर्जी और अ पार्टिकल, but different phenomena, different experiments when we perform, they prove different things। ठीक है, those experiments are not in scope of our course at IGCSE level, but A levels में जाके जब आप ये देखेंगे तो you'll get to see that। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट चीज जो हमारे पास फिर आती है दैट इज रेज एंड बीम्स। ठीक है जी। रेज और बीम्स हमारे पास क्या होते हैं कि a path, if we assume that light is traveling in a straight line। ठीक है, so the path that light is following, if I show it by a single arrowed line, this is called a ray, and a collection of such rays is called beams, beam sorry। ठीक है। अच्छा, बीम्स जो हैं ये मेरे पास दो तीन तरह की हो सकती हैं। आपने कभी, अगर आप जंगल में या किसी ऐसी जगह पे जहां आपके आसपास बहुत सारे दरख्त हों या क्लाउड्स में, आपने देखा होगा कि लाइट, सनलाइट जब उसके पीछे से आ रही होती है तो समटाइम्स इट्स कमिंग इन लाइक स्ट्रेट पैकेजेस, पैरेलल लाइंस लाइक दिस। तो दिस वुड बी अ पैरेलल बीम। समटाइम्स इट वुड बी लाइक दिस, ये स्कैटर हो रही होंगी अवे फ्रॉम ईच अदर। दिस इज कॉल्ड a divergent beam। And also we have got a convergent beam in which light rays, they are coming together at a single point। so ये हमारे पास तीन तरह की लाइट बीम्स होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। अच्छा जी, इसके बाद वी लाइट में हमारे पास शेडोज और इमेजेस, शेडोज और इमेज। हमारी आंख में जो हमें सामने ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास नजर आ रहे होते हैं या हमें मिरर में ऑब्जेक्ट्स जो नजर आ रहे होते हैं, दे आर ऑल इमेजेस। ठीक है, कोई एक रियल चीज है,
इट क्रिएट्स अ पिक्चर हमारी आंख में, इट क्रिएट्स टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ आवर आई, ठीक है, और वो फिर हमारे ब्रेन में जाता है वो प्रोसेस होने के लिए। रियल लाइफ में हम ये इमेजेस जो हैं ये कैप्चर करते हैं स्क्रीन्स पे। तो कुछ फिनोमेना जिसमें हम ये कैप्चर कर रहे होते हैं, वन इज मिरर्स, द अदर इज कैमरा, ठीक है जी। कैमरास में इनिशियली जो हमारे पास कैमरास थे, द फर्स्ट टाइप ऑफ कैमरा दैट वी हैड वाज पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा की सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कि यू टेक अ डार्क बॉक्स, ठीक है, उस बॉक्स के बैक एंड पे स्क्रीन है आपके पास, और फ्रंट एंड पे जो वॉल है उसमें यू अलाउ अ सिंगल होल सॉर्ट ऑफ, सिर्फ सिंगल एक पॉइंट या एक होल आपने देना जिसमें से लाइट एंटर हो सके इस बॉक्स में। देन यू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। सो फॉर एग्जांपल आई प्लेस दिस ट्रायंगल, ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन, light rays when they enter this pinhole camera they get inverted, ठीक है जी, and they form an inverted image at the back screen of this pinhole camera, ठीक है। अच्छा अच्छा, जितना ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द पिन होल, the smaller the object, the farther away it is from the screen, the bigger the image। हम इसके रूल्स लिख लेते हैं। the closer, जितना क्लोज होगा the smaller the image, the sharper the image, the sharper the image, and the brighter the image। ठीक है, similarly if I move it away from the pinhole then the image would become larger but it would lose its sharpness, so it would be less sharp and it would be less bright if I move it away from the pinhole, ठीक है जी। अच्छा, similarly there is another phenomena which we call shadows। shadows क्या होते हैं, if we block the path of light, if we block the path of light it creates an area of darkness, ठीक है। तो जो डार्क एरियाज होते हैं, एंड ऑब्वियसली द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में ये चीज इतनी क्लियर नहीं होगी। अच्छा जी, सो लेट्स सी if I've got a screen like this, ठीक है, स्क्रीन के पीछे I light a bulb and the rays of this bulb I allow them to pass only through a small hole in the screen, okay, and beyond the screen I hang a metal or tennis ball, ठीक है, and then I place another screen over here, okay। So on the second screen यहाँ से जो first of all rays आ रही होंगी, rays would come this way, rays would come this way and they would go on to create image of this ball on the screen। अच्छा, this particular shadow, this would be the shadow and it would be a sharp shadow। this is green, so this is a sharp shadow, ठीक है। In a slight change to this experiment, if I remove this let's say initial pinhole screen which I had put in front of this light bulb, what would happen is के चलें दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। what would happen is कि ये मेरे पास बल्ब आ गया and now I've got a ball in front of it। so now what would happen is again I've got a screen over here
there is this and this particular ray, ये जो है ये, और just a second, this particular one over here, they would cause a sharp shadow. So this sharp shadow region is called umbra, UMBRA. But there would also be a region of less dark shadow around this darker shadow. ठीक है, तो that particular region is called penumbra. ठीक है जी. The question is कि why are shadows formed? Shadows are formed for two reasons. Shadows are formed for two reasons. वो दो reasons क्या होते हैं हमारे पास? Shadows are formed for two reasons. ठीक है जी. नंबर वन हमारे पास ये होता है कि light travels in a straight line. Straight line. And the other reason is that opaque objects do not allow light to pass through them. Opaque objects do not allow light to pass through them. अच्छा, one thing I don't remember if I mentioned it or not at start of the lecture, कि हमारे पास all the objects that we are able to see, it is because of reflection. Because when light hits these objects, they are reflected, and then those reflected rays they enter our eyes. ठीक है. और अगर कोई object ऐसा हो which does not reflect off light, we will not be able to see such objects. ठीक है. हमारे पास नेचर में एक फिनोमेना है, there are things called black holes which are beyond your again scope of IGCSE or even A level scores. लेकिन लाइट के इसमें समझने के लिए ब्लैक होल्स हमारे पास, ब्लैक होल्स आर टिल दिस डे अ मिस्ट्री. इस वजह से कि they have a lot of energy and they suck up everything. They do not allow anything to pass through them, not even light. तो वो लाइट को भी सक कर लेते हैं. तो हमें ब्लैक होल के बारे में कुछ भी नहीं पता अदर देन दैट देयर इज अ होल, मतलब सर्कुलर हमारे पास शेप्स आ रही होती हैं इमेजेस में. तो यस, इवन लाइट इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू देम. अगेन लाइट क्योंकि उससे वो पास नहीं होती या रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ऑल वी सी इज डार्क सर्कल्स. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ब्लैक होल्स. अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव गॉट अ रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट, रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट विल एब्जॉर्ब ऑल. हमें लाइट का ये पता है कि लाइट जो हमारे पास है इट्स एक्चुअली वाइट लाइट. जो ओरिजिनली हमारे पास लाइट, हमारे पास तीन प्राइमरी कलर्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा, रेड ब्लू ग्रीन. ठीक है जी. रेड ब्लू ग्रीन को हम मिक्स करें तो हमारे पास सेकेंडरी कलर मिलते हैं, या इन तीनों को हम मिक्स कर दें तो हमारे पास वाइट लाइट आती है. ठीक है जी. सिमिलरली व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करें या किसी और फिनोमेना के में उसकी डिस्पर्जन हो रही हो इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, तो वी गेट दैट विबग्योर, या जो हमारे रेनबो के 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स. अच्छा, सो लाइट, व्हाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ these 7 colors. Whenever light is incident on any particular object, all those particular rays of different colors are absorbed except for the color of the object. ठीक है. मिसाल के तौर पे किसी रेड कलर ऑब्जेक्ट पे ये पड़ेंगी तो वो 6 जो रेज हैं या 6 जो कंपोनेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एज रेड. ग्रीन कलर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये व्हाइट लाइट पड़ेगी तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओनली ग्रीन कलर, ग्रीन रे वुड बी रिफ्लेक्टेड. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट एज ग्रीन कलर्ड.
अच्छा, तो again all the objects that we are able to see around us are because of reflection of light. अच्छा जी, this thing, this thing. अच्छा, similarly हमारे पास speed of light जो है, हमारे जितने भी physical objects हमारे पास हैं या phenomena हैं, उसमें speed of light is the highest speed that we have for any object. ऑब्जेक्ट कहना लाइट को इतना ठीक नहीं है, फॉर एनीथिंग कह लें स्पीड ऑफ लाइट. नथिंग ट्रेवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, नंबर वन. नंबर टू, देयर इज दैट फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, अगेन बियॉन्ड द स्केप ऑफ आवर कोर्स, but that equation tells us कि anything traveling, if anything travels at the speed of light, it would no longer remain as matter, it would convert into energy. ठीक है, तो हमारे पास कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है, इट कैन नॉट रीच स्पीड ऑफ लाइट. हमारे पास जो फिजिकल हम पार्टिकल्स को मूव करवा रहे होते हैं लेबोरेटरी में, वी गेट क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट, बट अगेन हमारे पास एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं पहुंचते. बाय द वे, स्पीड ऑफ लाइट एक आपको, आई डोंट थिंक पेपर में, 3 into 10 raised to the power 8 meters per second, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एक फिनोमेना लाइटनिंग का, बारिश होती है, बिजली चमकती है. व्हेन देयर इज लाइटनिंग, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि समटाइम्स वी हियर द थंडरस्टॉर्म बिफोर वी सी द एक्चुअल लाइट. लाइटनिंग दिखने से पहले, अगेन सिंपल रीजन उसका ये है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, देन साउंड. तो स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो हमें लाइट पहले नजर आ जाती है बिकॉज इट ट्रेवल्स फास्टर एंड रीचेस अस बिफोर द साउंड रीचेस अस. सिमिलरली हमारे पास ये जो हैं कुछ एयरक्राफ्ट हमारे पास होते हैं which fly supersonic, which fly faster than the speed of sound. So sometimes if they are going supersonic, so by the time you hear the sound of the plane and you try to look up to locate its location, you won't be able to see it क्योंकि it has moved ahead, or you heard the speed of sound after it had crossed that point. तो ये हमारे पास कुछ फिनोमेना जो हमारे पास लाइट, विजन और साउंड से को रिलेट करते हैं. अच्छा जी, दिस देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव गॉट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन, अच्छा जी, रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि लेट्स अज्यूम वी हैव गॉट अ प्लेन मिरर. ठीक है जी, इन दिस प्लेन मिरर one side is rough, ठीक है, and the other side is shiny. ठीक है जी, अब क्या होगा मैडम, if we have an incident ray of light. ठीक है जी, this is incident. At the point where this incident ray of light hits the plane mirror, we draw an imaginary line perpendicular to the plane and we call it normal. Okay. ठीक है, and the angle this incident ray makes to this normal is called angle of incidence. Okay. This is angle of incidence, let's call it angle I. Acha, then we have got this light ray, we know hitting the plane mirror it would be reflected, तो ये reflect होके it would go this way. ठीक है, the law says that angle of incidence, again the this is reflected ray, let's call it R, and this will be angle R. The law of reflection says that angle I would be equal to angle R. Angle of incidence Okay. is equal to angle of reflection when light is reflecting off a plane surface. ठीक है, माइंड यू दिस इज प्लेन सरफेस. अच्छा, अगर हमारे पास, चलें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं. इफ वी हैड लेट्स से 2 लाइट रेज या a beam of light
all be reflected for each particular ray in this beam of light, angle of reflection would be equal to angle of incidence. And this would happen on a Okay. plane surface. If instead of a plane surface, अच्छा एक और चीज, हमारे पास usually जो surfaces होते हैं, even the surfaces which seem smooth, they are not actually smooth. ठीक है, उसमें भी हमारे Okay. पास there are bumps or there are let's say um, irregularity. अच्छा, जो closest to the plane surface या plane surface हमारे पास actually होता है, that is mirror. ठीक है, Okay. हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल ये है, अगर हमारे पास सरफेसेस में इरेगुलरिटी ना हो तो द टू थिंग्स, देयर वोंट बी एनी फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो हमारे पास दो सरफेसेस के दरमियान होती है, इट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी बिटवीन दोज टू सरफेसेस. अगर इनमें इरेगुलरिटी ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, तो द टू थिंग्स वुड सिंपली स्लिप ऑफ ईच अदर. Okay. ठीक है, तो this thing, okay. So let's assume that now instead of a plane surface we have got a rough surface. ठीक है, इसमें Okay. हमारे पास रेगुलरिटी नहीं है, ये irregular surface है. So here again I've got an incident beam of light, but now it would no longer follow that original way in which an incident beam of light was reflected off as an like parallel beam. A parallel beam of light is reflected off as parallel beam if we have got a smooth surface, or a regular surface. If we have got an irregular surface, this parallel beam of light would be scattered after the reflection. Okay. ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास स्मूथ रिफ्लेक्शन हो तो we will be able to see the object as it was in its original shape. अगर हमारे पास Okay. irregular reflection होगी तो the object or the image that we get would be distorted from the original object. उसकी exact वैसी Okay. shape, size, brightness नहीं होगी जैसी original object की थी. तो दैट इज वाई हमें प्लेन जो मिरर्स होते हैं इसमें हमें लेट्स से क्लियर इमेजेस नजर आ रहे होते हैं, बट इफ वी हैव गॉट अ रफ ग्लास, ट्रांसलूसेंट और अदरवाइज किसी रफ ऑब्जेक्ट पे हमें इमेज तो नजर आ जाता है, बट इट्स नॉट एज शार्प और एज रेगुलर एज वी सी ऑन द प्लेन मिरर. ठीक Okay. है, अच्छा, ये फिनोमेना जो है, दिस इज आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप्स. पेरिस्कोप्स मैडम हमारे पास क्या होते हैं? So for example, there is this wall and the person is over here. ठीक है जी, जिसने आगे देखना. Okay. Okay, and what they want to see is some object that is placed over here. लाइट में हमें पता है कि नॉर्मल जो हमारे फिनोमेना है, इसको आंख को थोड़ा और करीब कर लेते हैं. लेट्स से ये जो आंख है ये यहाँ पे है. The person is over here. Okay. Now it seems impossible that this person would be able to see this object. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? We construct a periscope. We use mirrors. So first of all, we place this mirror like this at 45 degree. ठीक है, Okay. and this would be the normal line. So a ray from the object, मैं object को थोड़ा बड़ा कर लूँ. ठीक है, a ray from the object hitting this mirror, it has an angle of incidence of 45 degree. गलती हो गई है, रुके. Okay, this ray we are talking about, this is the angle we are talking about. This is 45 degree, and at 45 degree, sorry, it will be reflected this way. This is Okay. also 45 degree. ठीक है, then I place a second mirror over here at 45 degree, and
this would be the line normal, and again it will be reflected off at 45 degree. 45 degree, this will be 45 degree. So now you'll be able to see this object. ठीक है, Okay. तो दिस पेरिस्कोप प्रैक्टिकली जो इसकी है, एक तो यू कैन क्रिएट इट फॉर फन, ऐसे ही आप अपने कार्डबोर्ड जो हैं उनको वो जोड़ के बना लें. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वन दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ इज इन सबमरीन्स, जो सबमरीन्स विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर and which cannot, for example, appear on the surface of water to look around, and they want to look around at the surface of the water above the surface, so they use this periscope then. Okay. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है. प्रिज्म्स में ये हमारा प्रिंसिपल भी यूज होता है इंटरनल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन का. ठीक है. अच्छा, दिस then we have got plane mirrors. The next thing that we have got is plane mirrors. अच्छा जी, what happens is कि when you look into the plane mirror on the wall of a room, you see an image of the room. ठीक है, and what Okay. appears is that a room is behind that mirror. Okay, so for example, if you are standing in front of a mirror, it would appear that somebody looking like you is appearing as far within the mirror as far as you're standing from the mirror. ठीक है, Okay. तो restaurants, barbers या shops, sometimes they use this phenomena so that they place mirror on an entire wall of their hall या room या shop या जो भी है. तो उसमें जब शॉप रिफ्लेक्ट होके आती है तो इट लुक्स लाइक कि जितना डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ही फर्दर behind the mirror the image would appear in the mirror, so that would make a space look twice as big as it actually is. Okay. ठीक है जी, ठीक है जी. अच्छा, 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 ठीक है. Let's talk about real and virtual images. Acha, the image created in a mirror is a virtual image. It's not an actual image. It's not that it's actually over there. It's a virtual image. Virtual image से मेरी क्या मुराद है? So for example, you have got this plane mirror. ठीक है जी. अच्छा, in this plane mirror, you have an object of this height. Let's call it O. ठीक है. This object gives off rays of light into the mirror. Okay. ठीक है. जिस एंगल पे ये इंसिडेंट थी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी एंड दे आर डिटेक्टेड बाय एन आई, एक्सक्यूज माय बैड रन. ठीक है, दे आर डिटेक्टेड बाय एन आई. ठीक है, Okay. बट द इमेज दैट दिस आई सीज इज the image seen by the eye would be like something like this. ये इधर आके Okay. they would converge. ठीक है, now this image is virtual. Okay. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी. हम्म, ठीक है. इसी तरह the
image created in a plane mirror, it has a few properties. Let's write those down. The properties of image on a plane mirror. In a plane mirror, ठीक है जी, हमारे पास क्या होती हैं? The image is as far behind the image as the object in front. Image is as far behind behind the mirror as the object in front of it. और क्या होता है Okay. मैडम? What else? What about the size of the image? Is it the same size of as the object, or is it smaller or bigger? It's the same. It's the same size. Same size as the object. Same size as the object. Uh, then the image, is it real or virtual? Virtual. It's this is how all images are. So what would a real image be? अगर ऐसे ही है सारे images जो हैं they are behind the objects. It's not like that. जब हम lenses पढ़ेंगे तो lenses में we'll get real images. And if you get to perform the practicals of physics, so I think you'll come across those practicals where you actually would have to calculate the focal length of objects, and you'd be given a lens and you'd be asked to do calculations के इसका image कहाँ पे create होगा and different sort of things. अच्छा जी, Okay. virtual हो गया. And the fourth thing is it is literally inverted. अच्छा, whenever we are talking about, आगे जाके हम lenses भी जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम images पढ़ेंगे. तो whenever we are talking about properties of image, these are the four properties that we are actually asking for whenever somebody asks के इस image या इस particular lens में कैसा image बनेगा. तो number one we have to tell के how far the image is from the screen, from the lens, from the object, etc. Number two, we'll have to tell Mm-hmm. about the size of the object, the size of the image, whether it's the Okay. same as the object, bigger or smaller. ठीक है, we'll have to tell whether it's virtual or real, and last thing we'll have to tell whether it's inverted or erect. अच्छा जी, ठीक है. Literal inversion का I think you know the meaning, that left appears right and right appears left. Yeah. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी. This. Okay. Then the next thing that we have got is a refraction of light. A refraction of light. Refraction of light. What's refraction? Hanji, any idea what's refraction of light? Um. Okay, Uh. so it is the bending of light. Bending of light. Uh, when it enters from one medium to another. This is light. Uh, when it enters from one medium to another. Okay. So it's the same as a refraction in the waves. Yes, refraction is the same.
in light and waves. Refraction, it's the same thing. Hmm. अच्छा, Okay. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, गिव मी अ सेकंड। वेव्स में हमने क्या बात की थी? वेव्स में हमने कहा तो यही था, बट व्हाट एग्जैक्टली डिड वी स्टडी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेव फ्रंट्स की हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी थी ना? यस। Yeah. अच्छा, remind me to tell you a fact. Another thing, there is this thing about wavefronts which I forgot to mention yesterday. मैं आज इंशाल्लाह towards the end of the class वो दोबारा आपको बता दूंगा. I mean, I think it's that thing is clear, but still वो एक point है जो मेरे ज़हन में है कि मैंने बताना, तो I'll mention it towards the end of the class. Wavefronts और waves के Okay. बारे में. Okay, let's now write down the properties of refraction. So we've got properties, yeah, laws of refraction. ठीक है. When light enters from rarer medium to denser medium, enters from rarer medium into a denser medium, denser medium, it bends towards the normal. ठीक है जी. So if it is bending towards the normal, then angle I would be greater than angle R. Okay. ठीक है जी, ठीक है जी. If this, then the second thing would be the converse of it, that when the light enters from denser medium into a rarer one. So when the light enters from denser medium into a rarer medium, it bends away from the normal. ठीक है जी. And in that case, angle I would be less than angle R, or angle R is greater than angle I, whichever. ठीक है. Okay. This is the second property or second law. अच्छा जी. This, then array emerging from sinusoidal block is generally. ठीक है, ठीक है. The third one is कि
थर्ड के लिए लिख लें पहले, क्योंकि डायग्राम से समझ आएगा, डायग्राम हम एंड में ड्रॉ कर लेते हैं। अ रे इमर्जिंग, रे इमर्जिंग from a parallel sided block from a parallel sided block is parallel to the ray entering but is displaced sideways, is displaced sideways। Okay. ठीक है जी, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज के a ray traveling along the normal direction, a ray traveling along the normal direction along the normal direction at a boundary is not refracted। ठीक है जी। जी। अच्छा, यहाँ पे जब हम डेंसर की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकली डेंसर। सो ऑप्टिकली डेंसर by definition is an object which has a more greater refraction effect. In reality its actual density may not be greater, may not be, usually is, but it may not be greater in some cases। ऑप्टिकली डेंसर ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होता है कि जिसमें रिफ्रैक्शन आपकी ज़्यादा हो। अच्छा, Okay. तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम टू सी कि हमने ये जो सारे रूल्स लिखे हैं इनका मतलब क्या है। So here we have got, let's say, और इस block of glass में here is a ray of light incident on it। ठीक है जी। Okay. I will have normal over here। ठीक है। Since the light is entering from air into glass, glass is a denser object, this is angle R, and the light would bend towards the normal। ठीक है जी। लाइट रे को क्या होगा, it would become like, एक सेकंड रुकिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ डायग्राम को, लाइट को थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, let us create a wiggle angle of incidence, and this would be the angle of refraction, then angle R। ठीक है, and then Okay. this would again be normal। Since it's entering from air into glass, glass being the denser medium, it would bend towards the normal, and when Okay. it leaves this glass,
it is going from denser medium into rarer one, so it would again bend away from the normal. ठीक है Okay. जी. So this would again this angle, let's call it angle A. तो फर्स्ट और सेकंड रूल में तो हमें ये पता चल गया कि एंगल आई और एंगल आर विच वन वुड बी ग्रेटर, विच वन वुड बी स्मॉलर. ठीक है. सिमिलरली एंगल बी इसको कह देता हूँ, एंगल बी ये होगा विच विल बी इक्वल टू एंगल आर, and angle I would be equal to angle A. This is the third point. कि a ray emerging from this block would be parallel to the initial incident ray which was entering the block. Okay. ठीक है. So these two rays which are circled, they are parallel to each other. Okay. ठीक है. And the last point tells us कि if we have got this block of glass and the ray of light coming towards this glass is at the normal, so this ray would not be refracted and it would simply pass through. ठीक है जी. Okay. Since it's traveling along the normal. Okay. अच्छा जी. this thing. रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक दो चीज़ें और हैं, बट वी डू दोज इंशाल्लाह इन द क्लास आफ्टर ईद. अभी मैं आपको Okay. एक और चीज़ बता देता हूँ जो वेव फ्रंट वाली मैं आपको कह रहा था. अच्छा. Okay. ठीक है. लेट्स से दिस इज a source of light, a point source of light. ठीक है जी. Okay. तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा. ठीक है. Okay. It would be emitting light in all directions. ठीक है. अच्छा. light, let's assume it's going in the form of waves. Okay. वेव आपकी ये आ गई, एक वेव आपकी ये आ गई, सेम वेवलेंथ की वेव्स हैं. ये क्यों यार वापस क्यों नहीं करता. अच्छा. एक वेव आपकी बन जाएगी ये. ठीक है. एक Okay. वेव आपकी बन जाएगी, ये छोटी हो रही है, ये बन गई. वेव आपकी बन जाएगी इस लाइन पे, ये मैंने गलत बना दिया. all these waves they should be of the same wavelength. मेरी drawing थोड़ी खराब है, Okay. but they are coming out from the same source and are of the same length. Okay. अच्छा. Now a wavefront would be that I take any particular point on these waves, but the same point on all these waves. So for example, I take the end point जहाँ पे एक wavelength complete हो रही है. Okay. ये वाली wavelength draw नहीं कीजिए, यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. और ये point सारी waves पे मैं ले लूँ. And if I connect all these points, it would be a wavefront. ठीक है. Similarly, if I take the
top of crest at all these waves. टॉप ऑफ क्रेस्ट नहीं, बॉटम ऑफ ट्रफ है, बॉटम ऑफ ट्रफ है। सारी वेव्स में ये ले लूं और इन सब को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो दिस वुड बी अ वेव फ्रंट। ठीक है, मैं अगेन एक और पॉइंट भी ले सकता हूँ, ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लूं सब पे, तो कनेक्टिंग। ओके, इसकी एक और एग्जांपल देखने के लिए, अगर आप पानी में फिंगर डिप करके ऐसे निकालें, रिपल्स दैट इट सेंड्स सर्कुलर, ठीक है, वो आपके वेव फ्रंट्स होते हैं। यू माइट आस्क ए क्वेश्चन के कभी कभी हम पेपर में इस तरह आता है और कभी कभी क्वेश्चंस में हमारे इस तरह आएगा कि वेव फ्रंट्स जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ रही होंगी, तो हाउ कम दीज आर स्ट्रेट लाइंस देन? How come these wave fronts are straight lines? Is it correct to draw these as straight lines? Yeah, it's incorrect. Incorrect? It's correct. इसकी वजह ये होती है, आप कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है? Okay. This is a big circular object, ठीक है? इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का आप एक टाइनी, बहुत छोटा, इंतहाई छोटा पार्ट अगर आप कट ऑफ कर दें, तो this would have a very small bend or it would almost be straight. Okay. तो by study of differentiation, जो d by dx आप कर रही होंगी अपने मैथ्स में और कहाँ पे एड मैथ्स में, उसमें you're talking about very small changes, so small that if I talk about in case of a circle, कि अगर मैं इसका एक पीस कट आउट कर रहा हूँ, तो इट्स एज इफ आई एम कटिंग आउट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो दिस इज व्हाट आई meant to tell you about circular wave fronts or straight wave fronts. This is how we get them. Okay. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। we'll meet again day after tomorrow inshallah, same time. जी, hopefully. ठीक है। I don't have any plans as of now, but in case कोई चीज़ आती है तो I'll text your mother. ठीक है? Okay, ठीक है। Thank you very much. Allah Hafiz. ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर।